Now, the UK-based production house involved in pornography content, this racket here involving Raj Kundra, Crime Branch investigative team has said that this pornography racket involves Raj Kundra. Apart from that, a UK-based firm has now been named. In fact, this firm is owned by London-based Pradeep Bakshi. According to Crime Branch sources, Raj Kundra was working closely with the UK resident Pradeep Bakshi. 43-year-old Pradeep Bakshi is a relative of Kundra and director of UK-based firm named Kenrin Production House. During investigation, it was found that the accused and actress Gehna Vashisht and Umesh Kamath were involved in producing porn films for Kenrin Production House. After the shoot of the porn film, the videos were then sent through an application to Kenrin Production House in the UK to avoid any law enforcement agencies in India. After editing, sources tell us that these porn films were uploaded on an application called Hotshot. During investigation in this pornography case, the Crime Branch has also come to know that Kenrin Production House was allegedly doing business of pornography and funding pornographic content through different agents in India. Let me cut across to Vidya joining us live from Mumbai. Vidya, over to you. We hear that a UK-based company has now been identified called Kenrin Production House, and one Mr. Pradeep is said to be spearheading it. He's one of those directors and he's also related to Raj Kundra. We believe in nexus with the two firms, one locally headed by Raj Kundra and this London firm have been churning out pornographic content, and to hoodwink authorities, they've been routing those videos through various apps, including one called Hotshot. In fact, Hotshot was the company which Raj Kundra is alleged to have sold to Bakshi, who is also his own brother-in-law. In fact, the court was specifically told by the investigating officer who told the court that police inspector told the court that in fact, in spite of having sold, is what Raj Kundra has been saying, that in spite of the fact that he has sold the company to Bakshi, in spite of that there were WhatsApp groups in which almost everyday discussions about what is to be shot, how is to be shot, how the pornographic content is to be provided. All that is being discussed. In fact, just a few days ago, Raj Kundra is alleged to have spoken to Ryan John, the other person who was arrested with Kundra and brought to court today, as to how they should not really be discussing all these issues on that group on WhatsApp. And there are various such instances that the prosecution has brought in the forefront to show that Raj Kundra was still involved in spite of having claims that he had sold off that company to his own brother-in-law. He was still very much involved, and that's one of the reasons why there are statements of some of the girls and who, according to the prosecution, were pushed into prostitution because of Raj Kundra, luring them into such kind of business of pornography on the promise of making them actors. So certainly this is the allegation that has been leveled by the prosecution. Although the Vidya, I'm going to cut you right short. We're cutting across to the Mumbai police, who's briefing the media right on this case. त्यामध्ये अजून खोल तपासावर गेला असता असं निष्पन्न झालं की यांची जी कंपनी आहे राज कुंद्रा यांची वियान कंपनी आहे, वियान नावाची, त्यांचं एका केनरिन नावाच्या कंपनीशी टायअप होतं, अग्रीमेंट होतं. केनरिन नावाची कंपनी जी आहे ही लंडन स्थित आहे आणि राज कुंद्रा यांचे जे ब्रदर इन लॉ आहे, म्हणजे बहिणीकडून जे ब्रदर इन लॉ आहेत, हेच ती company own करतात. केनरिन लंडन स्थित आहे. Raj Kundra had sold off his company. ही कंपनी जरी This is exactly what we were discussing just some time back. The company Kenrin is owned by the brother-in-law of Raj Kundra. केनरिन जरी लंडन मध्ये And it was स्थित असली तरी याचे सर्व कंटेंट क्रिएशन, त्यानंतर ह्या ॲपचं सर्व ऑपरेशन्स, so Hotshot and Kenrin, both of their producing their entire content was being produced right here. जे की राज कुंद्रा यांची ओनरशिप आहे. It was being done
including the हाँ, accounts सखोल of तपास Vian, करत were being असताना handled by या सर्व गोष्टी सर्व the company, the धागेदोरे, Vian company, which is सापडलेत. based out of त्यांचे Mumbai. काही व्हॉट्सॲप ग्रुप सापडलेत, ईमेल एक्सचेंजेस सापडलेत, अकाउंटिंग शीट सापडल्यात, जे We have हॉटशॉट्सवर received many जे WhatsApp चित्रफिती groups. दाखवल्या These होत्या, WhatsApp प्रसारित groups केलेल्या होत्या, include त्यासुद्धा, people like Raj आपल्याला Kundra and सापडल्या. everyone. काल कोर्टाची परमिशन घेऊन We have आपण found त्यांच्या ऑफिसेसचं पूर्ण सर्च केलं. त्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला सर्व इन्क्रिमिनेटिंग गोष्टी we had आपल्याला taken permission सापडल्यात. from आणि the म्हणून, court, and we have found, तपासांती आपण, after searches were राजकुंद्रा completed at आणि their त्यांचे offices, IT चे, we have found lot of head evidence. आहेत, रायन थॉर्प म्हणून, त्यांना ह्या दोघांना सुद्धा काल रात्री अटक केलेली आहे. Ryan आता पुढचा तपास Rajan सुरू was आहे. हॉटशॉट्स नावाचं जे ॲप आहे ह्याच्यावर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट असल्यामुळेच ॲपल स्टोअरनी त्याला जून 2020 साली ते टेकडाऊन केलं होतं आणि नोव्हेंबर 2020 साली गुगल प्ले स्टोअरने सुद्धा हे ॲप डाऊन केलेलं आहे. त्यामुळे ते आता त्या ठिकाणी नाही आहे. हे आता वेगवेगळ्या ॲप्सच्या माध्यमातून हे कॉन्टेंट Google Play Store and the app was taken off. And but in spite of that, the pornographic material was being shown. आणि बाकीचा जो एव्हिडन्स आहे तो घेऊन मुंबई पोलीस We have electronic and documentary evidence and other evidence, which is the reason why we will be proceeding with the investigation against all these people. फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था. उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है. उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज़ में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं. ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा. वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था. इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक, रादर कल तक, क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है. इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं. इसमें जैसे रोआ खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है. जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है. उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है. ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था. इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के ज़रिए. हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था
कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से, मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसमें हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। थैंक यू। Crime Branch Mumbai registered an offence in February 2021 at Malwani Police Station regarding picturization of some pornographic films and their publishing. It was observed during the investigation that some small-time artists were lured into giving break in some web series or some short stories. They were asked to, they were called for auditions and were asked to give some bold scenes, which later on translated into semi-nudity and complete nude scenes also, which was against their wishes. So some of these victims, they approached Crime Branch Mumbai. We registered the offence and investigated. During investigation, we found out that there were many such apps which were operating in this cyber world. Out of that, we've arrested some producers like Roa Khan and her husband, Gehna Vashisht, Tanveer Hashmi, Umesh Kamath. Now, during investigation, we found that Umesh Kamath is looking after the India operations of Mr. Raj Kundra, who is a well-known